So today I'm going to discuss the next concept which is used in mobilization, and it is very important that we should know about this concept. Basically, it is end feel which is given by James Sirius. What do you understand by end feel? It is defined over here. The end feel is defined as the perception of the resistance pattern in the paraphysiological space. जब भी हम कोई मूवमेंट परफॉर्म करते हैं तो क्या होता है, फर्स्ट इज योर एक्टिव रेंज ऑफ मोशन. आफ्टर द एक्टिव रेंज ऑफ मोशन, if you apply or if you try to move the limb further, you will feel a resistance, soft tissue resistance, which is basically perceived in paraphysiological space. तो इसी रेजिस्टेंस को हम बोलते हैं एंड फील. एंड it is in normal circumstances. Basically, it is categorized in three different categories. The first is capsular or leathery. In this hand feel, the perception of resistance is like stretching a piece of leather. Generally, जब आप जिस भी जॉइंट पे परफॉर्म करोगे, जब आपका कंप्लीट रेंज आप रेंज कंप्लीट कर लेते हो, जो भी अवेलेबल रेंज ऑफ मोशन है, उसके बाद जब आप फर्दर उस जॉइंट को मूव करने की कोशिश करोगे, देन यू विल फील सच टाइप ऑफ रेजिस्टेंस लाइक आफ्टर व्हेन यू परफॉर्म द abduction after 170 और 80 डिग्री ऑफ शोल्डर. अगर आप शोल्डर को कंप्लीट रेंज एक्टिव रेंज परफॉर्म करो और फर्दर मूवमेंट आप ट्राई करो, पैसिवली आप परफॉर्म करने की कोशिश करो, तो वहाँ पे आपको एक रेजिस्टेंस फील होगा एंड इट विल बी फील लाइक यू आर स्ट्रेचिंग अ पीस ऑफ लेदर. सो इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस इट इज ऑल्सो परसीव्ड. Second is tissue approximation. It is again, it is also observed in normal circumstances. बहुत सी ऐसी कंडीशन होती है, स्पेशली इन केस ऑफ ओबिसिटी, जहाँ पे जॉइंट के आसपास इतने ज़्यादा सॉफ्ट टिश्यू होते हैं बिकॉज ऑफ द एडिपोज टिश्यू और फैट टिश्यू कि लिम्ब या जॉइंट पूरी तरह से जो अवेलेबल रेंज है या जो नॉर्मल रेंज होना चाहिए वो कंप्लीट नहीं कर पाता, बिकॉज उससे पहले क्या होता है कि टिश्यू आपस में अप्रोक्सीमेशन होता है, वो मिलने लगते हैं एंड दैट क्रिएट अ हिंड्रेंस इन रेंज ऑफ मोशन. तो ओबिसिटी हो या कोई ऐसा हो जिसने इतनी ज़्यादा कंडीशनिंग कर रखी है कि वहाँ पे मसल मास बहुत ज़्यादा हो, लाइक जो जिम वगैरह जाते हैं लोग, जहाँ पे मसल फाइबर बहुत ज़्यादा होते हैं जॉइंट के सराउंडिंग में, तो वहाँ पे भी कई बार कई एथलीट्स या रेसलर होते हैं, उनको क्या होता है कि इतनी ज़्यादा कंडीशनिंग या इतनी ज़्यादा बॉडी बिल्डिंग कर लेते हैं कि उनका मसल मास इतना ज़्यादा हो जाता है कि और 90 से ऊपर बाइसेप्स इतनी ज़्यादा हो जाती है कि पता चलता है 90 और 100 डिग्री के बाद उनका फर्दर एल्बो का मोशन पॉसिबल नहीं होता. दैट इज कंसीडर नॉर्मल एंड फील इन केस ऑफ टिश्यू अप्रोक्सीमेशन. बट अगर ये कंडीशन परसिस्ट कर रही है, देन अल्टीमेटली इट विल compromise or it will lead to the decreased mobility of that particular joint. Next is bone to bone end feel. Again, it is available in normal circumstances. Here, at the end of the range of motion, when you try to push the limb further, like we can take the example of elbow joint. अगर हम इसको फ्लेक्स कर रहे हैं, फर्स्ट वी विल फील द soft or leathery end feel, and if you try to move it further, ultimately you will feel a clunk sound, and there are lots of joint in body where you can feel this clunking sound like performing here interphalangeal joint. तो यहाँ पे क्या होता है, because of the two bony lever, when two different bony lever or articular surfaces come in contact and they don't allow further movement, such type of end feel is called the bony end feel or bone to bone end feel. So all these three are the
normal and feel. Now come to the abnormal and feel. What happen in abnormal and feel? The end feel are considered abnormal when the range of motion available at a joint is restricted. सपोज आपका एल्बो डिज़ाइन है टू परफॉर्म अबाउट 135 और 150 डिग्री ऑफ फ्लेक्शन, लेकिन किसी वजह से बिकॉज ऑफ एनी पैथोलॉजी और एनी कंडीशन आपका 90 और 100, फॉर एग्जांपल पोस्ट fracture stiffness, or in case of any malalignment or malunion of bone, if suppose you are not able to perform the further range of motion, means after 90 degree or after 100 degree you are not able to move your limb, means it will be called abnormal end feel. Without completing the available range of motion, if there is any type of resistance or restriction is feel, then it will be considered as abnormal. So basically these are the broad category of abnormal and feel. You can see the first three, abnormal and feel, is same like the normal and feel. Capsular or leathery and feel, कब आप abnormal बोलोगे? It is found in case of capsular tightness in any condition. As I told you that because of the prolonged immobility or in case of frozen shoulder, such type of end feel we can perceive. क्या होता है कि आपका फ्रोजन शोल्डर के केस में जो फीलिंग आपकी कंप्लीट रेंज को कंप्लीट करने के बाद आती है, फॉर एग्जांपल शोल्डर पे अगर अबडक्शन कर रहे हो, आपका जो फील 170 और 180 डिग्री के बाद फील होता है, द सेम एंड फील विल बी परसीव prior to that or earlier to that, डिपेंडिंग अपॉन द रेस्ट्रिक्शन ऑफ रेंज ऑफ मोशन। कि अगर 90 डिग्री पे आपका हो गया रेस्ट्रिक्शन, इतना ज़्यादा हो गया है कि आपका 90 डिग्री तक आपकी रेंज अवेलेबल है, देन एंड यू जस्ट ट्राई टू मूव द लिम्ब फर्दर पैसिवली, तो सच टाइप ऑफ एंड फील विल बी परसीव. The second is tissue approximation in case of elephantitis or in case of any swelling, gross swelling because of the uh, uh, extravasation of fluid around any joint or because of the any soft tissue tumor, such type of end feel may perceive, and that also restrict the normal range of motion of that joint. Next is bone to bone end feel. It is mentioned here because of the malalignment. आपका कोई फ्रैक्चर हुआ, हीलिंग हुई प्रॉपर, उसका अलाइनमेंट या एंगुलेशन कुछ भी ऐसा डेफिशिएंट रहा, उसको करेक्ट नहीं किया गया, एंड बिकॉज ऑफ द इंट्राआर्टिकुलर माइस, इस टाइप का एंड फील मिलता है जहाँ पे आपकी जो अवेलेबल रेंज ऑफ मोशन है उससे पहले ही आपका बोनी क्लंक फील होगा. आप जब मूव करने की कोशिश करोगे तो आपको ऐसे ही फील होगा कि दो बोनी सरफेसेस आपस में स्ट्राइक कर रही हैं, टकरा रही हैं, एंड such type of end feel is called bone to bone end feel, and it is basically abnormal if it is perceiving prior to the completing range of motion. और इसको जानना बहुत इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि मोबिलाइजेशन की कंडीशन में अगर इस तरह का एंड फील है, अगर कोई माल यूनाइटेड फ्रैक्चर है या कोई फ्रैक्चर फ्रैगमेंट है इंट्राआर्टिकुलरली माइस है, कोई लूज बॉडी है, एंड you are just trying to improve the mobility of that joint, so you cannot improve that mobility of that joint. तो ये जानना ज़रूरी है. यहाँ पे आप कुछ भी करके मोबिलाइजेशन से रेंज ऑफ मोशन या मोबिलिटी अचीव नहीं कर सकते. यहाँ पे सिंपल सा एक ही काम होता है, दैट यू हैव टू रिफ़र द पेशेंट फॉर टू
other medical practitioner, especially to your orthopedic surgeon. Next is spas. We can observe this type of and feel on daily activity, स्पेशली कभी भी आप अपनी आइडियल से हट के कुछ ऐसा काम कर लो जिसमें आपकी मसल पंप हो जाए, या आप जिम जाने वाले हो, आप जिम में अक्सर एक्सरसाइज करने के बाद क्या होता है, मसल टोन अप हो जाती है, पंप हो जाती है, और या आपने ओवर यूज़ कुछ ऐसा किया है किसी बॉडी पार्ट का कि बहुत ज़्यादा यूज़ किया है, मसल गार्डिंग डेवलप हो जाती है, और ऐसी कंडीशन में भी बिकॉज ऑफ द टाइटनेस ऑफ मसल्स you will not be able to perform the complete range of motion around that particular joint. तो ये हम जनरली ऑब्जर्व करते रहते हैं, चाहे एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग हो या कोई जिम एक्टिविटी हो या कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो आपकी रूटीन से हट के है, जहाँ पे मसल फटीग हो रही है, ओवर यूज़ हो रही है, वहाँ पे बिकॉज ऑफ द मसल गार्डिंग ऐसा होता रहता है. नेक्स्ट इज योर next type of abnormal and feel is springy block. Basically, it is a very special type of end feel, and most commonly it is found basically it is found in case of meniscal tear, where when you try to move the bony lever, means when you try to push the leg in flexion, ultimately either you will feel a bony block, or even in some cases when you perform further movement and relieve the force, or just remove the force, the limb will bounce back, and this is basically found in case of meniscal injury. Next is empty type of end field. Here it is found in case of tumor, bursitis, or in case of any severe inflammatory condition, where is the dominant feature is basically your pain. Because of the severe pain, patient doesn't allow you to move the limb further. Means after moving the certain range, patient apply resistance, there will be counter force, which is basically patient knowingly try to restrict the further movement because of the severe pain. So that is called the empty type of end feel. So these are the 5 or 6 type of end feel which is considered as abnormal. That is, one is capsular or leathery. Second is tissue approximation, which is found in case of severe swelling or any other pathological condition. Bone to bone end feel, which is found in case of malunited fracture, intra-articular mice. Spasm, it is observed in daily activity because of the muscle pump or muscle guarding. We can observe such type of abnormal end feel. A springy block, which is specifically found in case of meniscal tear, and last is empty end field, which is found in case of tumor or bursitis or any other inflammatory condition where the predominant symptom is pain. So it's all about the end field. Thank you.